And this video, we will solve this question. The question is, a box contains 100 light bulbs. The probability that there is at least one defective bulb is 0.1. At least one defective की probability दी हुई है, that is 0.1, and the probability that there is at least two defective means two and more than two defectives probability इसने दी हुई है, that is 0.05. Find हमें क्या मालूम करना है? Find the probability that the box contain no defective bulb. Probability of zero defective. Probability that the box contain no defective. No defective means zero defective bulb. Second में हमें find करना है the probability that contain exactly one defective bulb. What is the probability that the box contain exactly one defective bulb? And what is the probability that the box contain at most one defective? At most one defective means one defective or zero defective. ज़्यादा से ज़्यादा one defective की probability हम मालूम करें तो most में हम क्या करते हैं, नीचे जाते हैं. At most one means one and zero. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन. फर्स्ट हम सैंपल स्पेस बनाते हैं इस 100 बल्ब्स के लिए कि पॉसिबल डिफेक्टिव बल्ब्स, सैंपल स्पेस फॉर पॉसिबल डिफेक्टिव बल्ब्स. तो इस 100 बल्ब्स में 0 भी डिफेक्टिव हो सकते हैं, 1 भी डिफेक्टिव हो सकता है, 2 भी, 3 भी डिफेक्टिव हो सकता है, एंड ऑल 100 भी डिफेक्टिव हो सकते हैं. गिवन दैट probability of at least one defective at least one defective की probability given है, that is probability of at least one defective is 0.1. probability of at least two defective, its probability is given here, that is 0.05. At least one defective means one defective or two defective or three defective up to so on, one and above. At least two defective means two defective, three defective, four defective up to 100 defective. So at least one means we will go from one and above, and at least two means we will go up from two and above. So here we need to find the probability that the box contain no defective. At least one defective means one defective, two defective, three defective up to 100 defective. At least two defective means two defective, three defective, or up to 100 defective. So the total sample space is 0 defective, 1 defective, 2 defective, 3 defective up to 100. The probability for this sample space, for this whole sample space, is 1. Means at least 0 defective means 0 defective or 1 defective, 2 defective, 3 defective up to 100 defective. Now we need to find the probability of at least, we solve 1 and 1, find the probability that the box contain no defective. Probability of no defective items in the box. Probability of no defective item. No defective means, probability of no defective means 0 defective. So 0 defective, we need this probability of 0 defective. ठीक है, तो अगर हम इस ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव और 1 डिफेक्टिव और 2 डिफेक्टिव और 3 डिफेक्टिव अप टू 100 डिफेक्टिव, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1. ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन डिफेक्टिव, its probability is given here, that is probability of at least one defective is 0.1. अगर हम इस टोटल प्रोबेबिलिटी में से एट लीस्ट वन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट करें, अगर हम इस टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट करें, total probability is 1 and this probability is 0.1, तो हमारे साथ ये रह जाएगा 0 की probability. So this can be written as probability of 0 defective means 1 minus probability of at least one defective. So this will be equal to 1 minus, this is given at least one defective probability is 0.1, so 0.90 implies that probability of 0 defective or no defective will be equal to
no defective equal to 0.90. Now we have to solve the second part, that is probability that it contain exactly one defective. Probability of exactly one defective. हमें ये प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी मालूम करना है। तो हमारे साथ एटलीस्ट वन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी, वन डिफेक्टिव और टू डिफेक्टिव, थ्री डिफेक्टिव और 100, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हमारे साथ क्या है 0.1 है। एंड एटलीस्ट टू डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हमारे साथ गिवन है, दैट इज 0.05। अगर हम एटलीस्ट वन डिफेक्टिव ये इस सारे से एटलीस्ट टू डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे साथ एटलीस्ट वन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी रह जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ at least one defective इस प्रोबेबिलिटी से आप सब्ट्रैक्ट करें माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ at least two defective, तो ये आपके साथ आ जाएगा। एटलीस्ट वन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, एटलीस्ट टू डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हमारे साथ 0.05 है, तो यू विल गेट आंसर 0.05 implies that probability of exactly one defective हमारे साथ क्या है 0.05। थर्ड पार्ट में मांगता है the propound probability that contain its most one defective। थर्ड नंबर सॉल्यूशन है probability of at most one defective। At most one defective means probability of zero defective plus probability of one defective। ठीक है, probability of zero defective ये probability हमने मालूम की है, that is zero defective it is 0.90 plus probability of one defective इसकी probability हमने मालूम की है, that is exactly one defective is 0.05, so 0.95 implies that probability of at most one defective will be 0.95।